Okay, in this chapter we will discuss about metals and non-metals. Okay, this is chapter 3 CBSE NCERT. Okay, kindly subscribe my channel and like, share and comment the video. Okay, let's start. Okay, at first metal का फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सा होता है? एट फर्स्ट मेटल इज सॉलिड्स. ओके, मेटल इज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, बट देयर इज अ एक्सेप्शन. व्हाट इज द एक्सेप्शन? मरकरी इज ए मेटल, बट मरकरी और इसको कहता है हाइड्रागायरम. Okay, and gallium are liquid state at room temperature. This is the exceptions, and this is very much important questions. Generally metals are solid at room temperature, but exception है mercury और hydragyrum and gallium are liquid state at room temperature. Okay, next properties, luster. Shine in their pure state. Okay, in pure state they are shine. Polished to give a highly reflective surface. Okay, metals are polished to give a highly reflective surface. Okay, यहाँ पे देखो ये है mercury. Okay, mercury is a metal but it is liquid at room temperature. It is exception. Okay, it is gold in pure state it is shine, but it is polished to give highly reflective surface. Okay, next, malleability. What is malleability? Malleability is a property of metal. Okay, that means can be made into thin sheets. मतलब metal को made into thin sheets. Okay, this is a property of a metal by this property metal can be converted into thin sheets. Okay, this is very important term, you should remember. Okay, यहाँ पे देखो malleability, एक हैमर है, एक मेटल है, मेटल गोल्ड है, तो इसको मेटल हैमर्ड इनटू थिन शीट्स. ओके, इसको हैमर्ड किया है, मेटल हैमर्ड इनटू थिन शीट्स. ये थिन शीट्स है, एक थिन शीट्स है. ओके, gold is the most malleable metal. Okay, this should be remembered. Gold is the most malleable metal. Okay, now comes to the fourth property of metals. Okay, ductility. Okay, ductility. Metals can be drawn into thin wires. Okay, this property is called ductility. What is malleability? Metal can be done into thin sheets. Thin sheets is malleability, and thin wires drawn into thin wires, this is called ductility. This is the basic difference between ductility and malleability. Okay, you should remember this, and this is very important questions. Okay, most ductile, gold is most ductile, or aurum is the Latin name of gold. Okay, most ductile क्या है? गोल्ड है, सिल्वर और अर्जेंटम. Okay, 1 gram of gold can be drawn into a wire of 2 km length. Think about it. Okay, 1 gram of gold can be drawn into a wire of 2 km length. Okay, next, conduction of heat. Okay, metal is the good conductor of heat, obviously, and have high melting points. Have high melting points mean metal melts in high temperature. Okay, so now कौन सा मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट है? एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर. ओके, सिल्वर एंड कॉपर. ओके, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, कॉपर का जो लैटिन नेम है उसका क्यूप्रम. ओके, क्यूप्रम. ओके, कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम. Silver and copper best conductor of heat, and poor conductors of heat कौन सा है? एक है lead. ओके, plumbum इसका लैटिन नेम है, lead and mercury. ओके, mercury and lead poor conductor of heat. ओके, plumbum and mercury poor conductor of heat. Then
Next property, conduction of electricity. Okay, metal is obviously good conductors of electricity. Okay, and electric wires are made up of copper. देखो copper wire. Okay, copper wire having an outer insulations, but ये जो copper wire है इसका बाहर में एक outer insulation है. किसका insulation है? PVC. Okay, PVC, polyvinyl chloride. Okay, electric wires are made up of copper having outer insulations of PVC, polyvinyl chloride. Okay, here all important questions have. Okay, now hardness of metals. Generally metals are hard but differs from metal to metal. Okay, but differs from metal to metal. Alkali metals such as sodium and potassium are soft metals and can be cut easily with a knife. Okay, so what is the alkali metals? This is sodium and potassium are soft metals. Okay, and can be cut easily with a knife. Next come to the melting point and boiling point. Obviously melting point and boiling points of metal are high. Okay, boiling point high means metal boils in high temperature. Okay, so टंगस्टेन और वुल्फ्राम, इसका W से इंडिकेट करता है टंगस्टेन और वुल्फ्राम को हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. ओके, मतलब इट मेल्ट्स इन हायर टेम्परेचर एंड टंगस्टेन एंड वुल्फ्राम आर यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट. विद इन बल्ब फिलामेंट, ये जो बल्ब का जो फिलामेंट है ना, इसको टंगस्टेन और टंगस्टेन यूज़ होता है. ठीक है, टंगस्टेन और वुल्फ्राम यूज़ होता है बल्ब का फिलामेंट में. Why it is used? Because tungsten and wolfram have highest melting point. Okay, sodium and potassium low melting points. Okay, this should be remembered. Next come to the next characters, physical properties of metals. Sonorous. Okay, sonorous produces sound on striking a hard surface. Okay, metal produces a sound on striking a hard surface. Example, bells. Okay, obviously it produces sounds when striking a hard surface. Okay, now comes to the physical properties of non-metals. Okay, so at first point, non-metals either in solids or gaseous state. Okay, either in solid or gaseous, but here is an exceptions. What is the exceptions? Bromine is liquid. Okay, bromine is liquid. This is the exceptions of non-metals. Non-metals basically solid or gaseous state, but exception is bromine, which is liquid state. Okay, second is usually do not have luster, but exceptions. यहाँ पे भी exception है. Iodine have luster. Do not, third points, do not possesses the property of hardness, but यहाँ पे भी exception है. Exception क्या है? Carbon in the form of diamond. Okay, this is the exceptions. Carbon is non-metal, but it has property of hardness. Okay, basically it is the hardest substance known, which also has the high melting point and boiling point. Okay, it is the hardest substance known, which also has a high melting and high boiling point. Okay, next character, do not conduct electricity, but यहाँ पे भी exceptions है. Okay, graphite is a allotrope of carbon. Okay, what is allotrope? Allotrope means a different physical form. Okay, different physical form of one substance. Here carbon का बहुत सारे allotropes है. Example, graphite है, diamond है, fluorine है, fullerene है. Okay, these are the allotropes of carbon. But here the properties. Okay, do not non-metals do not conduct electricity, but here exceptions is graphite. Okay, graphite is a allotrope of carbon. All the exceptions here, all the exceptions you should remember. Okay, हम लोग क्या देख रहे हैं? There are exceptions in each of the physical properties. Okay, हम लोग यही देख रहे हैं ना, there is exceptions of in each of the physical properties of metals and non-metals. Okay, so
What should be done? Then elements can be classified more clearly by, on the basis of which? On the basis of their chemical properties. Okay, so elements can be classified more clearly by their chemical properties. Okay, by their chemical properties, which one is metals, which one is non-metals. Okay, so next, come to next slide. Okay, देखो metals and non-metals are clearly classified by their chemical properties. So here chemical properties of metals at first. Okay, देखो देखो क्या पॉइंट्स क्या है, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है. ओके, क्या कैसे रिएक्ट करता है, ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to form metal oxide. Okay, all metals react with oxygen to form metal oxide, but reactivity differs. The reactivity of metal differs for different metals. Okay, this should be remembered. देखो sodium and potassium are the most reactive metals. Sodium react with oxygen in the air in at room temperature to form sodium oxide. Hence sodium is stored under kerosene. This is very much important question. Sodium is stored under kerosene oil to prevent its reaction with oxygen, moisture and carbon dioxide. Okay, this is very much important question. Why sodium is stored under kerosene oil? Because sodium is highly reactive metal. Sodium reacts with oxygen in the air at room temperature. Hence sodium is stored under kerosene oil to prevent its reaction with oxygen, moisture and carbon dioxide. यहाँ पे देखो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस किया है. ओके, देखो देखो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर. ओके, बट सम मेटल ऑक्साइड्स dissolve in water to form alkalis. Okay, which are basic in nature obviously. सो एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन सा मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर एल्काली प्रोड्यूस करता है, क्या क्या है, सोडियम ऑक्साइड Na2O एंड पोटाशियम ऑक्साइड K2O डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कालिस. ओके, देखो यहाँ पे रिएक्शन है, सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस किया है एंड दिस इज बेसिक इन नेचर. ओके, एंड पोटाशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस किया है एंड दिस इज बेसिक इन नेचर. ओके, बेसिक इन नेचर. ओके, देखो व्हाट हैपेंस टू मैग्नीशियम. Magnesium does not react with oxygen at room temperature. Okay, this is important point. Magnesium does not react with oxygen at room temperature, but on heating magnesium burns in air with intense light and heat to form magnesium oxide. This is very much important reaction. Magnesium burns in the air with intense light and heat to form magnesium oxide. देखो रिएक्शन क्या क्या है, magnesium and oxygen and heat to form. Okay, with the help of heat magnesium oxide form किया है, magnesium and oxygen with the help of heat magnesium oxide form किया है. Okay, देखो next come to the zinc. Okay, zincs burn in air only on strong heating. Okay, zinc and oxygen in the presence of strong heat form जिंक ऑक्साइड. ओके, देखो जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस किया है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हीट. आयरन डज नॉट बर्न इवन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. ओके, आयरन डज नॉट बर्न इवन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. ओके, बट आयरन फिलिंग्स, व्हाट इज आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स क्या है, स्मॉल चिप्स ऑफ आयरन. ओके, स्मॉल चिप्स ऑफ आयरन्स और दैट लुक लाइक्स आयरन, light iron powder. Okay, burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. Okay, burn vigorously. Iron fillings, so this should remember iron fillings, but iron does not burn even on strong heating. Okay, solid matlab solid big iron plate does not burn even strong heating, but iron filling burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. And iron and oxygen react करके produce क्या करता है, ferric oxide. Okay, this is ferrous oxide actually. This is ferrous oxide. Okay, Fe3O4. This is ferrous oxide. Okay, basically आयरन्स का 2 वैलेंसी है, 2 and 3. अगर देखो O4 मतलब आयरन का वैलेंसी यहाँ पे 2 गया है,
2 × 2 4 हुआ है, इसलिए आयरन का जो छोटा वैलेंसी है उसको हम आस्क कहते हैं, आस्क फेरास, एंड जो बड़ा वैलेंसी है 3 उसको हम इक कहते हैं, इक। ओके, इक, बड़ा को इक एंड छोटा को आस्क कहता है। यहाँ पे देखो आयरन का 2 वैलेंसी यूज हुआ है, इसलिए फेरस ऑक्साइड। दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट फेरस एंड फेरिक ऑफ आयरन। ओके, what happened in case of copper? Okay, copper is least reactive. Okay, copper is least reactive, it does not burn, but on heating the hot metal जो है coated with a black color layer of copper oxide. Okay, this is very important. Copper is least reactive but it does not burn, but on heating hot metals is coated with a black colored layer of copper oxide. Okay, this is the reactions, copper and oxygen with the presence of heat, copper oxide. Aluminium develops a thin oxide layer when exposed to air. Okay, in case of aluminium also develop a thin oxide layer. Okay, this is the oxide layer when exposed to air. Okay, aluminium and oxygen react करके aluminium oxide produce किया है, ये reaction है. Next come to the anodizing. What is anodizing? Okay, anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminium. Okay, aluminium develops a thin oxide layer when exposed to air. Okay, this aluminium oxide coats, this aluminium oxide coats. Okay, aluminium oxide coats Al2O3. This aluminium oxide coats makes it resistant to further corrosion. Okay, so it is advantageous for aluminium. The resistance can be improved by making the oxide layer thicker. Obviously, in air aluminium produces a core that is aluminium oxide. Okay, this is a thin layer and it resists further corrosions of aluminium. So the resistance can be improved by making the oxide layer thicker, obviously. Okay, so what is the technique? In this technique, aluminium article is used as an anode. Okay, as an anode. Anode is positive charge. Used in electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, एंड द एनोड रिजल्ट्स in the formations of black colored thin film of aluminum oxides on the surface of anode. So what happened there? यहाँ पे एल्यूमिनियम जो कंपोनेंट है जिसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट करना है उसको हम एनोड और पॉजिटिव चार्ज हिसाब से यूज़ करता है. ओके, यहाँ पे है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जब करंट यहाँ पे देते हैं तब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H+ एंड O- मीन्स ऑक्सीजन आयन में एंड हाइड्रोजन आयन में डिविजन हो जाता है. ओके, सो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है एंड एनोड को पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन होकर ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाता है एंड ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम का रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. ऐसे ही कोटिंग हो जाता है. ओके, ऐसे ही ब्लैक कलर का एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग हो जाता है. यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस एंड H+ आयन रहता है सॉल्यूशन में, एंड दिस इज एनोड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव आयन, नेगेटिव ऑक्सीजन आयन एंड फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड एनोडाइजिंग प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, देखो यहाँ पे एनोडाइजिंग प्रोसेस. ओके, देखो ये वाला एनोड है. एनोड मतलब ये एक एल्यूमिनियम का पाथ है. ओके, सो एनोड मीन्स पॉजिटिव चार्ज. ओके, कैथोड है ये वाला नेगेटिव चार्ज. ओके, यहाँ पे है H2SO4 डाइल्यूट H2SO4. जब यहाँ पे करंट आता है तब डाइल्यूट जो H2SO4 है वो हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आयन में टूट जाता है. ओके, एंड ऑक्सीजन आयन नेगेटिव चार्ज होता है, वो ऑक्सीजन आयन पॉजिटिव एनोड की तरफ जाता है एंड
यहाँ पे एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन का रिएक्शन करके प्रोड्यूस होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, Al2O3, and this is a coat formed, okay, this is coat formed aluminium, and aluminium this aluminium जो पाथ है वो more resistant to corrosion, okay. So जो aluminium आफ्टर एनोडाइजिंग जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया है, सो दैट इज मोर रेसिस्टेंट टू corrosion, okay. In this anodizing process we produce more corrosion resistant aluminium, okay, by forming a aluminium oxide coat, over the aluminium. Thank you. Okay, by putting appropriate dyes in the electrolytic bath, colored surface with decorative finish can be achieved. जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो बाथ होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ, ये इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ, यहाँ पे एक एनोड है, यहाँ पे एक कैथोड है, यहाँ पे आपका डाइस रहता है. सो बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट डाइस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ, colored surface with decorative finish can be achieved, okay. Kitchen articles like anodized pressure cooker, anodized pan, okay, and also frames of sliding windows are the applications of anodizing technique, okay. These are the applications of anodizing technique. Anodizing technique पिछले स्लाइड में मैंने जो बताया है उसका जो एप्लीकेशंस है वो है आपका ये जो एनोडाइज्ड प्रेशर कुकर से, एनोडाइज्ड पैन से, एंड फ्रेम्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो, जो स्लाइडिंग जो विंडोज होता है उसका फ्रेम एनोडाइज्ड टेक्निक का एक एप्लीकेशंस है. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक इन नेचर, ओके, but some metal oxides such as aluminium oxide and zinc oxide reacts with both acids as well as bases to produce salt and water, okay. So यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर प्रोड्यूस किया है. एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे सॉल्ट है एंड इट इज़ वाटर. फिर से देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट प्रोड्यूस किया है एंड वाटर प्रोड्यूस किया है. सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे एक सॉल्ट है. तो व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दिस मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. ओके, इस स्लाइड में भी सेम चीज़ है. Amphoteric oxides, okay, amphoteric oxides, some metal oxides react with acids and alkalis to produce salts and water, okay. Example है aluminium oxide, okay. देखो मतलब aluminium oxide एक बार बेस एज ए बेस यूज़ होता है एंड दूसरी बार एज अ एसिड हिसाब से यूज़ होता है, ओके. देखो aluminium oxide एज अ बेस aluminum chloride and water produce किया है and aluminum oxide as an acid, okay. So both characters have within aluminum oxide, okay, both characters of acids and bases have within aluminum oxide, hence aluminum oxide is called amphoteric oxides, okay. यहाँ पे देखो reactions of metals with water. Metal like potassium and sodium react vigorously with cold water, okay. This is important. Sodium reacts with water, evolve hydrogen, okay. यहाँ पे देखो sodium reacts with water, evolve hydrogen, and that hydrogen immediately catches fire, producing lot of heat. And this reaction is exothermic reaction, okay. This reaction is exothermic reaction. यहाँ पे देखो सोडियम एंड वाटर की रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है. एंड सिमिलरली पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया है, ओके. यहाँ पे देखो
पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर vigorously एंड कैचेस फायर। यहाँ पे देखो फायर हुआ है, यहाँ पे फायर हुआ है। ओके, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है वो हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। ओके, इमीडिएटली कैचेस फायर। यहाँ पे भी सोडियम वाटर के कोल्ड वाटर के साथ vigorously रिएक्ट करके जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व किया है वो इमीडिएटली फायर प्रोड्यूस करता है एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, यहाँ पे देखो कैल्शियम का रिएक्शंस विथ वाटर। ओके, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर लेस vigorously. ओके, the heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire. ओके, कैल्शियम एंड वाटर का रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होता है वो इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। ओके, instead calcium starts floating because the bubble of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. Okay, so यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ओके, व्हाई फ्लोटिंग? बिकॉज द बाबल ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का जो बाबल है गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, कैल्शियम स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, इसलिए कैल्शियम जो है वो फ्लोट करता है, स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ओके, मैग्नीशियम्स का देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। ओके, magnesium reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. Okay, magnesium also starts floating because जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है उसका बाबल फॉर्म करता है, वो बाबल गैस स्टिक टू इट्स सरफेस। ओके, मैग्नीशियम जो है उसका सरफेस में स्टिक हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। Okay, come to the metals like aluminium, iron, zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steam. Okay, this is very much important, but they react with aluminium, iron and zinc react with steam to form metal oxide and hydrogen. Okay, देखो aluminium and steam, water steam and iron and steam. यहाँ पे एलुमिनियम एंड स्टीम रिएक्शन करके एलुमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया है। यहाँ पे देखो आयरन एंड स्टीम रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया है। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ओके, metal like gold, silver and copper do not react with water. Now reactions of metals with acids. Okay, reactions of metals with acids. देखो, metal reacts with acids to give salt and hydrogen gas bubble. Such example, a dilute hydrochloric acid and metal. Here formations of metal chloride and hydrogen gas bubble. Okay, the reactivity decreases is in order. यहाँ पे देखो एक ऑर्डर है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक। मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है एंड फेरिक आयरन का रिएक्टिविटी सबसे कम है। ये 4 मेटल्स के अंदर देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक एंड उसके बाद फेरिक। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बबल प्रोड्यूस किया है। एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस बबल प्रोड्यूस किया है। जिंक HCl के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस बबल प्रोड्यूस किया है। एंड फेरिक HCl के साथ रिएक्ट करके फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बबल प्रोड्यूस किया है। But no bubbles are seen in case of copper. Okay, no bubbles, that means no bubbles are seen, मतलब no hydrogen bubbles are seen in case of copper. Okay, this shows that copper does not react with dilute hydrochloric acid. Okay, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एंड मेटल का रिएक्शंस देखो। आयरन जो है, आयरन रिएक्ट्स vigorously and exothermically. Okay, मतलब प्रोड्यूस हीट exothermically react with sulfuric acid to produce iron (2), मतलब फेरस
ओके, मतलब आयरन का 2 वैलेंसी यूज़ हुआ है, 2 वैलेंसी यूज़ हुआ है आयरन। फेरस सल्फेट प्रोड्यूस किया है। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया है। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया है। मैग्नीशियम सल्फेट एक सॉल्ट है, जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है एंड फेरस सल्फेट भी एक सॉल्ट है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेटल का जो रिएक्शन, यही है। ओके, नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन देखो कैसे होता है। नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। ओके, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। है ना, मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड? बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब जो इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन, जो प्रोड्यूस हाइड्रोजन होता है ना, इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन टू वाटर। ओके, H2 से इसको ऑक्सीडाइज करके H2O फॉर्म कर दिया है। एंड इट सेल्फ नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? रिड्यूस टू एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, गेट माने इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा। ओके, तो रिड्यूस नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होके क्या प्रोड्यूस करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। क्या क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है। ओके, but magnesium and manganese reacts with dilute nitric acid to evolve hydrogen gas. This is exception. Okay, magnesium and dilute nitric acid HNO3 react करके magnesium nitrate which is a salt and hydrogen gas produce किया है। Okay, देखो। Okay, next come to aqua regia. Very much important for exam perspective of view. Okay, what is aqua regia? Aqua regia is highly corrosive as well as fuming liquid and is one of the reagents. Aqua regia is one of the reagents that able to dissolve gold and platinum like noble metals. Okay, gold and platinum is dissolved into aqua regia. Okay, so how aqua regia is prepared? It is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. Very much important. Okay, 3:1. Concentrated hydrochloric acid is to concentrated nitric acid का होता है 3:1. It is freshly prepared. Okay, aqua regia is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. Aqua regia. Okay, it is a Latin name. Its meaning royal water or king's water. Was so named by alchemists obviously because it dissolves the noble metal gold and platinum. Because it can dissolve the noble metal gold and platinum, that's why its name is aqua regia. That means royal water or king's water. Okay, reactions of metals with solutions of other metal salts. Okay, देखो, put an iron nail in the solutions of copper sulfate. Put an iron nail in the solutions of copper sulfate. क्या प्रोड्यूस होता है? कॉपर एंड फेरस सल्फेट। देखो, आयरन in this reactions more reactive, iron is more reactive than copper. Okay, so copper replace होकर, मतलब आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है यहाँ पे इन दिस रिएक्शंस। तो क्या फॉर्म करता है? देखो क्या फॉर्म करता है यहाँ पे? फेरस सल्फेट फॉर्म हो जाता है, फेरस सल्फेट। ओके, एज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, hence iron replaces copper from copper sulfate. Okay, and produces ferrous sulfate and copper. Okay, so this reaction is called displacement reaction. This is a displacement reactions. Okay, so देखो यहाँ पे क्या होता है? The iron nail gets coated
gets coated with reddish brown color copper, okay, reddish brown color copper, and the blue color of copper sulfate solution. copper sulfate solution का जो कलर है ब्लू कलर वो फेड्स आउट हो जाता है, ओके। यहाँ पे फेड ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस आयरन के साथ रिएक्शन करके उसका कलर फेड्स आउट हो जाता है, ओके। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। द ब्राउन कोटिंग, देखो यहाँ पे ब्राउन कोटिंग, द ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल शोज दैट द कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन द आयरन नेल, ओके। एंड द ग्रीनिश कलर, यहाँ पे देखो ग्रीनिश कलर हुआ है, ग्रीनिश कलर ऑफ द सॉल्यूशंस इन द टेस्ट ट्यूब शोज दैट ferrous ion Fe2 plus ferrous ion are present in the solutions. Because of ferrous ion this greenish color is present, okay. This shows that iron is more reactive than copper, as ferrous ions have displaced Cu2 plus ions from copper sulfate solutions, okay. This shows that Fe2 plus ions is more reactive than copper 2 plus ion. That's why greenish color after reaction occurs, okay. This is a single displacement reaction, okay, single, in which copper has been displaced by iron from copper sulfate solution, obviously, and a more reactive metal can displace less active metal from its compound in a solution, okay. ओके यहाँ पे देखो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, ओके। सो टू सी रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, लेट अस लुक एट electronic configurations of some metals, okay, electronic configurations, okay, this is important. Some metals and non-metals, it will help us to understand the reactivity of different elements and formations of different compounds, okay. We have learned that noble gases have completely filled valency, okay, completely filled valency of noble gases, so hence they are chemically inactive. Noble gases are chemically inactive. और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, यहाँ पे देखो टाइप ऑफ एलिमेंट्स मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल। एलिमेंट्स क्या है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, एटॉमिक नंबर 11। सो व्हाट हैपेंड, एटॉमिक नंबर अगर 11 हो तो मतलब सोडियम का अंदर प्रोटॉन जो है उसका नंबर है 11 एंड इलेक्ट्रॉन भी 11 है, 11 इन नंबर, ओके। सो this is nucleus, okay, this in the center in this diagram, in the center this is nucleus and this is K shell, okay, this is a shell, K shell, this then L, this is L shell, this is M, and this is N shell, okay. K shell is number 1, L 2, M shell is number 3 and N is number 4, ओके। एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर का, ये 2n स्क्वायर मतलब n इज शेल नंबर, ओके। सो 2n स्क्वायर जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स इन शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स इन शेल, ओके। 2n स्क्वायर मतलब के शेल में यहाँ वैल्यू 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में क्या होता है 2, यहाँ पे देखो एन स्क्वायर मतलब एल का नंबर कितना है 2, मतलब 2 स्क्वायर कितना है 4, 4 इंटू 2 8, मतलब एल शेल में 8 है, ओके। एम देन देखो एम शेल में, ओके, एम शेल में कितना होगा सोडियम का मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो के शेल में 2 है, एल शेल में 8 है, 8 प्लस 2 10 है, और रिमेनिंग कितना है 1 है, और रिमेनिंग नेक्स्ट सेल में चला जाएगा, ओके, एम सेल में, ऐसे करके, ओके। अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो एम सेल में 2n स्क्वायर मतलब यहाँ पे 3 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 इंटू 2 18, मतलब एम सेल में 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे देखो ऐसे करके ये फॉर्मूला है एक, मतलब 18
18 नहीं होगा, but there is an octet rule. Okay, a shell is stable. A shell is stable when they contains 8 electron. Okay, this is stable. This is octet rule. Okay, now सोडियम के देखो एटॉमिक नंबर है 11, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है 281। मैग्नीशियम का देखो 282, एल्यूमिनियम का देखो 13, 283 एंड पोटेशियम का देखो 28, और 28 के बाद रिमेनिंग कितना है 9। 9 से क्या होगा 8 m में चला जाएगा और 1 n में चला जाएगा, क्योंकि 8 एक सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्टेबल होता है, इसलिए 8 इसमें 8 हुआ है और बाद में 2 चला गया है ऑक्टेट रूल के हिसाब से। कैल्शियम को देखो अकॉर्डिंग टू 2n² फार्मूला m शेल में 18 हो सकता है, बट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम ज़्यादा स्टेबल होगा, और इसलिए जो रिमेनिंग 10 है उसमें 8 m शेल में है और रिमेनिंग 2 बाहर सेल में मतलब एन सेल में चला गया। ओके, नॉन मेटल का देखो सेम करके, हाँ, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, फॉस्फोरस का 15, सल्फर 16 एंड क्लोरीन 17, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो सोडियम। ओके, सोडियम एंड क्लोरीन के बारे में अलग अलग से देखो। पहले सोडियम ए मेटल, सिल्वर कलर्ड मेटल, ओके, that reacts violently with water, that flames are produced due to the formations of the hydrogen gas. We all know that. Chlorine is non-metal, greenish color gas, which is a poisonous, that was used as a weapon in World War I. Okay, but when chemically bonded together, these two dangerous substances form a compound sodium chloride, so safe that we eat it every day. Okay, this is the information all about sodium chlorine and sodium chloride. Okay, there is an octet rule that outer shell, if outer shell has 8 electron, then this atom is very much stable. यहाँ पे देखो सोडियम का जो आउटर शेल में, सोडियम का आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, बट क्लोरीन का आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से पाएगा लेगा तो क्लोरीन माइनस आयन फॉर्म होगा एंड दैट इज स्टेबल, वेरी मच स्टेबल। ओके, सो क्या होगा ना, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आउटर सेल में चला जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, एज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, सोडियम donate 1 electron to chlorine. Okay, so sodium plus ion is formed. Okay, it is a cation is formed as 1 electron is donated by sodium to chlorine, and chlorine accepted the electron. As a result of this, chloride ion is formed. Okay, Cl minus ion. Okay, as electron is negative charge, then by accepting 1 electron, chlorine get converted into chloride ion. Okay, this sodium ion and chloride ion form sodium chloride. Okay, this प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा, देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसको बॉन्ड कहता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सो सोडियम इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, सो सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे समझ रही हो। सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड ion, that is anion. Sodium ion, that is cation, and so chloride ion, that is anion. Both are formed and sodium chloride is formed, that is common salt and we use it every day. Okay, पिछले स्लाइड में मैंने जो आप लोगों का बताया है वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे देखो सोडियम 281 atom has 1 electron in its outermost shell. Obviously, if it loses 1 electron from its M shell, then its L shell becomes outermost shell to acquire a stable octet. Okay, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक स्टेबल ऑक्टेट बनाया है। ओके, एक स्टेबल ऑक्टेट बना है। L shell becomes outermost shell then and acquire a stable octet. This is octet rule. The nucleus of this atom still has 11 protons,
but the number of electrons has become 10. So there is a net positive charge as a sodium cation. Okay, so plus charge is formed. Number of electron has become 10. Okay, so there is a net positive charge giving us a sodium cation. As there is a 11 proton and 10 electron, then a positive charge giving us positive extra जो positive charge है proton का वो giving us sodium cation. And on the other hand, chlorine 287 has 7 electron its outermost shell and requires one more electron to complete its octet. Okay, so chlorine gets one electron from sodium and get converted into chlorine minus ion, that is an anion. Okay, as क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. ओके, मतलब इसका प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन है 17, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए क्लोरीन का ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन एनायन है. ओके, देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा है. द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम इज टेकन अप बाय क्लोरीन. ओके, ऑब्वियसली आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इट्स KLM shell have altogether 18 electron but nucleus is still 17 proton. This leads to the proton is positive and obviously electron is negative, proton is positive, so this leads to the formation of chloride ion. Both these elements have a give and take relation between them. Okay, सोडियम एंड क्लोरीन का क्या रिलेशन है? गिव एंड टेक रिलेशंस. ओके, thanks to everyone. Kindly like, share and comments the video.